So, good morning, all of you. Moving to our next topic, the capital needed in the farming. Okay. So, first of all, as we all know that farming required great deal of money. Okay. Farming required great deal of capital because it is a very expensive method. Okay. We have to buy agricultural tools, pesticides and fertilizers, okay, tractors and threshers also. So we have to spend lot of money on the agricultural production. So now farmers needs more money than before because of the use of the HYB seeds. So from where they get money? So most of the small farmers have to borrow money to arrange for the capitals. It means farmers have to borrow money okay, to arrange कैपिटल. यानी जो छोटे किसान होंगे ना, उनको क्या करना पड़ेगा? पैसों को उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा. ठीक है ना. बोरो का मतलब होता है उधार लेना. ठीक है ना. पैसा यानी पूंजी जमा करने के लिए. ठीक है. बोरो कहां से लेंगे? सो दे बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स. ओके. सो दे बोरो मनी. कहां से बोरो करेंगे मनी? दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर और विलेज मनी लैंडर. Money lender is a person who lends money. Okay, money lender or a trader who deals with the various goods. Okay, it means कि farmers have to borrow money, and the money they borrow from the large farmer or a village money lender or trader, and these persons take more interest. Okay, so rate of interest is high. It means rate of interest is high. देखिए, मनी लेंडर से लोगे, फार्मर से, बड़े फार्मर से लोगे या किसी ट्रेडर से अगर आप पैसा उधार लेते हैं तो रेट जो होता है किसका? इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा होता है. ठीक है ना. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एवरी टाइम इज वेरी हाई. ओके. एंड दे आर पुट ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. इट मीन्स उनको पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. किसके लिए? लोन देने के लिए. टेक अ स्टोरी ऑफ सविता. ओके, लेट्स लुक एट द स्टोरी ऑफ द सविता. फ्रॉम दिस स्टोरी यू नो अबाउट द कंडीशंस ऑफ द इंडियन फार्मर्स. सो सविता इज ए स्मॉल farmer. Okay, she plans to cultivate wheat on 1 hectare of land. It means she have only 1 hectares of land. ठीक है. कितनी जमीन उसके पास? केवल 1 हेक्टेयर की जमीन उसके पास है. ठीक है. सिंपल सी बात होगी. देन so she decided to cultivate on his 1 hectare of land, and for this many things are required. Okay, for this she needs seeds. She need cash to buy seeds. Okay, fertilizers and pesticides. Okay, so she take a loan of 3,000. Okay, she takes loan of 3,000 rupees from Tejpal Singh.
Okay, who is Tejpal Singh? Tejpal Singh is a large farmer. कौन है तेजपाल सिंह? तेजपाल इज ए लार्ज फार्मर ऑफ द पालमपुर विलेज. ठीक है. तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव. ओके, तेजपाल gave her loan. Okay, gave her loan, but rate of interest on loan is 24% for 4 month. इन 4 महीनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 24% था. बहुत ज्यादा होता है ये. ठीक है ना. एंड बिसाइड दिस सविता हैज टू promise to work on his field also. It means Savita accept that she would work on the तेजपाल फार्म. ठीक है. मतलब इतने कमीने हैं ये लोग. 24% का तो इन्होंने 4 महीने के लिए 24% की दर से, इट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 24% थी 4 मंथ के लिए. वो तो लिए लिए, साथ ही साथ अपने खेत में भी काम करवा रहा है विदाउट मनी के. ठीक है ना. विदाउट तेजपाल फार्म, नॉट विदाउट मनी, एट 100 रुपीज पर डे. 100 रुपीज पर डे. ठीक है ना. यानी 100 दिन 1 रुपये का काम उसको करना है. ठीक है. एंड एज वी नो डेट द वेजेस इज वेरी लो, एंड सविता ऑल्सो नो डेट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, एज वेल एज शी हैज टू वर्क ऑन द तेजपाल फील्ड ऑल्सो. ओके, दोनों जगह काम करना पड़ेगा उसको. एंड वी नो द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम. ओके, हार्वेस्ट टाइम is always busy time. ठीक है ना. हार्वेस्ट के टाइम हमेशा क्या होता है? बिजी टाइम होता है. एंड शी इज द मदर ऑफ 3 children. इट मीन्स शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. एंड इन दोज कंडीशन ऑल्सो सविता एग्रीज टू दिस कंडीशंस. है ना. मतलब इतना करने के बाद भी उसको ये मालूम चल गया कि मुझे क्या करना है. She has to repay her loan. है ना. लोन तो वापस देना ही पड़ेगा. ओके. सेकंड वन इज दिस वन. दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉट सविता, many lakhs of farmers in a country, India. Okay, and as we know that we got information that in a particular area farmer commit suicide because they are unable to repay their loans. है ना. हम सुनते हैं ना कई बार न्यूज में आते हैं कि भाई फार्मर जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया है. सुसाइड क्यों कर लिया? क्योंकि वो अपना लोन जो है वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया है. ठीक है ना. तो अब जो सुसाइड उन्होंने कर लिया तो वो तो बड़ा मुश्किल बात होगी कि देश के किसान सुसाइड करता है. ठीक है. सो in contrast to the small farmers, medium and the large farmers have their own saving. Okay, so medium and the large farmers, ठीक है, they have their own savings. Okay, they got these savings from the previous year's surplus sales of the grains. Okay, so they are able to arrange capital as a need. It means they can arrange capital at their own. इट मीन्स वो अपने जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो खुद ही पूरा कर सकते हैं.
ठीक है ना. So how do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. Next section में इसका आपको आंसर मिलेगा. ठीक है ना. So among the three factors of production, we found that labor is the most abundant factor of the production. It means main important thing is, note that labor is the most important. Labor is the most important factor of production. ठीक है ना. लेबर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, प्रोडक्शन का. ये हमको पहले से मालूम चल चुका है. एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबर. इन कई लोग हैं जो फार्म लेबर के ऊपर काम करना चाहते भी हैं. ठीक है ना. एंड दे बिलोंग टू द लैंडलेस फैमिलीज और अ स्मॉल प्लॉट होल्डर्स फैमिली. ओके, या किसी पर जमीन नहीं होगी या उसी पर थोड़ी सी ही जमीन होगी. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर इज मीन्स अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 7th पॉइंट, इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. Suppose that farmers have produced wheat on their land using three factor production. Okay, it means after completion of harvesting, farmers have surplus ग्रेन्स और क्रॉप्स, है ना, बच जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा. सो फार्मर्स हैव सरप्लस ग्रेन्स, सो दे यूज सम पार्ट ऑफ द ग्रेन, सम पार्ट्स ऑफ द क्रॉप्स फॉर देयर कंजम्पशन, है ना. यानी कुछ पार्ट तो अपने खुद के यूज करने के लिए रखेंगे. एंड सेल द सरप्लस व्हीट, सेल द सरप्लस व्हीट. ठीक है ना. यानी कुछ तो क्या करेंगे, वो रख लेंगे अपने पार्ट के लिए, बाकी जो बच जाएगा उसको क्या कर लेंगे, वो बेच देंगे. ठीक है ना, बेच देंगे. And as we know that Savita has a small part of land, and that small part of land she have less amount of surplus wheat. Okay, and that wheat is unable to feed their family for a year. यानी जो उसके पास होगा, जो wheat हुआ कम होगा, और जो भी होगा उसको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसको वो सारा पैसा किसको देना पड़ेगा, तेजपाल को देना पड़ेगा. She has to repay her loan to Tejpal Singh. Okay, so Savita types of farmers don't have less, I think they have less benefit from farming. Okay, so the medium and the large farmers have more benefit. Means small farmers have less benefit, whereas medium and large farmers have more benefit. मीडियम और लार्ज फार्मर्स को तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बेनिफिट होगा, जबकि स्मॉल फार्मर्स को क्या होगा, कम बेनिफिट होगा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द लैंड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ओके, सो एज वी नो दैट तेजपाल हैज अ बिग फार्म. तेजपाल हैज अ बिग फार्म. ओके, सो ही हैव 350 क्विंटल्स ऑफ wheat.
350 क्विंटल्स ऑफ वीट। कितने वीट हुए इसको? 350 क्विंटल्स। क्विंटल्स यानी एक क्विंटल में 100 केजीस होते हैं, ठीक है ना। तो इतने वीट इसको हुए उसकी जमीन में। सो ही सेल सरप्लस वीट एट रायगंज मार्केट। ओके, सेल सरप्लस वीट, सर प्लस वीट टू रायगंज मार्केट, ठीक है। यानी रायगंज के मार्केट में सरप्लस वीट को क्या कर रहा है, ये सेल कर देगा, बेच देगा, ठीक है। व्हाट विल ही डू विद द अर्निंग, है ना, विद द अर्निंग he save or deposit, he is saving or money into bank and use this money in future, next agricultural season. Okay, but farmer like Savita who were in the need of a loan, it means he saved the deposit, he is saving or money in the bank, and he uses this money to lend. Okay, he used this money to lend loans to Savita like farmers, Savita type farmers. I have got the alert of battery drain, so we have to finish this work fast. Okay, so this is the production of the farming. Okay, so next is non farming activities. Next is non farming activity. Okay, so what we mean from non farming activity, it means, so first non farming activity is dairy production. Okay, dairy, other common activity. So as you know that in the Palampur village, only 25% people working in the Palampur, it means only 25% people are engaged in the activities other than agriculture. Okay, and these 25% of peoples, they perform various types of non-farming activities like dairy production. Okay, dairy is common activity. It is very common activity. It is very common activity in India. Okay, as we all know that we sell milk to dairies to get some money, यानी हम दूध बेचते हैं कुछ मनी पाने के लिए. Okay, so people feed their buffaloes. Okay, they feed their buffaloes, ठीक है ना, they feed their buffaloes on various kinds of grass, है ना, grass, ज्वार एंड बाजरा. यानी वो क्या दे रहे हैं, अपने बफेलो जो है भैंस को बहुत सारे अलग प्रकार घास खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, ठीक है ना. ठीक है, मिल्क इज सोल्ड टू रायगंज. मिल्क इज सोल्ड टू रायगंज मार्केट. ओके,
There are two traders from the Shahpur towns have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. It means collection center. So collection center is there. Collection center is there in Raiganj. Okay, and from here milk is sold to the market. Milk is sold to the cities. Okay, so milk is the dairy is the first non-farming activity. Second is an small scale manufacturing. Small scale manufacturing. Okay, $50 people. Okay, less than 50 persons in Palampur village, they engage in manufacturing. Okay, engaged in manufacturing. Okay, unlike the manufacturing that take place, okay, they don't have big factories as it is in the town or the cities. Okay, they have only simple production method. They have simple production method, and these can be done in the small scale. Okay, can be done on small scale. Okay, and they are carried out mostly at homes. Carried out at home. Okay, or in the field. Okay, next is third one is shopkeepers. The shopkeepers. Okay, people of the Palampur also involved in the shopkeeping. Okay, so they have small shops. Okay, they have small shops. Okay, so the traders of the Palampur are shopkeepers who buy various goods from the wholesale market. It means they buy goods from wholesale dealers. Okay, from cities. Okay, from cities. Okay, many small general stores are there. It means in the shop many kinds of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, some candles, biscuits. Okay, biscuits, notebooks are sold in the shop. Okay, these are the items that sold in the shop. Okay, few families have shops. Few families have shops near bus stand. Okay, they have shop near bus stand and they sell in the open shops. Okay,
mostly they sell eatables. They sell eatables. Okay, next activity is number fourth activity is transport. Okay, is transport. So variety of vehicles, as I earlier told that Palampur village is connected to the Raiganj market with the road. So many rickshaw, in many rickshaw wala and tanga wala, jeep, tractors, truck drivers, and people driving the traditional bullock cart and bogies are people in the transport service. Okay, they are engaged in transport service. Okay, they are engaged in transport service. Okay, so number of people involved in transport has grown over the last several years. Okay, so these are the transport activities, and this they take crops from Palampur village. Okay, from Palampur village and sell it and sell the crops to market, and in this way they get work. Okay, so in this chapter I told you about that. I teach you about the various sectors of productions. Okay, and this chapter is finished now. We have also learned about the non-farming activities done in the Palampur village, and some of the non-farming activities like dairy production, shopkeepers, small scale manufacturing, and transport. Transport is the first developing sector in the India and in the world also. Okay, so we will meet in the next video also. These are some important questions for you. It is a homework. Do it very carefully in a clean and fair handwriting, and send it to me in a clear PDF file. Okay, thank you very much.